हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फंड्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से देखिए। और मैं जो चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट 4 के क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, बीकॉम ऑनर्स के क्वेश्चन पेपर है। तो इसे अच्छी तरीके से देखिए। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको सारे पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे एट वेरी रिजनेबल प्राइस। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। म्यूचुअल फंड इज ए फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी दैट पुल्स द सेविंग्स ऑफ द इन्वेस्टर्स फॉर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज। द फंड इज टर्म्ड एज म्यूचुअल बिकॉज ऑल इट्स रिटर्न्स माइनस its expenses are shared by the fund's investors. A mutual fund serves as a link between the investor and the securities market. It collects the savings of the individuals and institutions and channelizes their savings, especially essentially in corporate securities, in which a way as to ensure steady returns and capital appreciation and reduced risk. Full stop. The members of the fund enjoy collectively the benefits of expertise in investment by specialists in the fund. टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट्स फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। फुल स्टॉप। टुगेदर to the variety, needs and preferences of large numbers of savers, many types of funds are offered by the mutual fund. First, the various mutual funds may be classified under 5 broad categories. सबसे पहला देखिए, according to ownership, according to scheme of operation, according to portfolio, according to location and others. सबसे पहले बात करते हैं according to ownership. According to ownership, mutual funds in India may be classified as, सबसे पहला वाला है पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड। पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड रेफर्स टू द फंड floated by public sector financial institutions, that is in India mutual fund floated by the UTI, LIC, Canara Bank, SBI are the public sector mutual fund. उसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स एंड बाय द प्राइवेट कंपनीज इन टर्म्स एज प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड। इसके कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे कि मैं आपको बता दूं। एक तो आपका ऑफिशियली जो है प्राइवेट है निपॉन इंडिया, जो कि रिलायंस का होता है। निपॉन इंडिया ये म्यूचुअल फंड होता है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड होता है। उसके बाद और भी कई सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ ऑपरेशन। अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ ऑपरेशन, म्यूचुअल फंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। सबसे पहला देखिए ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। इन केस ऑफ ओपन एंडेड स्कीम, द म्यूचुअल फंड कंटिन्यूअसली ऑफर्स टू सेल एंड रीपरचेज इट्स यूनिट्स एक्ट, दैट इज नेट एसेट वैल्यू NAV और NAV रिलेटेड प्राइसेस। नंबर बी देखिए क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ए क्लोज एंडेड म्यूचुअल scheme has a fixed return and a definite maturity period. Such schemes are listed in stock exchanges and the investors can buy and sell the units of the scheme in the market. The price of the units in the stock market is determined by the forces of demand and supply and hence could be different from the NAV. Number C देख सकते हो इंटरवल म्यूचुअल फंड। इंटरवल स्कीम इज ए स्कीम which has the feature of both the open end and close ended schemes. उसके बाद बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फंड। सम ऑफ दिस फंड्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले देखिए इनकम फंड। Income fund aims at maximizing the current income of the investors from investment. There are 2 aspects of income. सबसे पहले देखिए low risk and constant income, also the high risk and maximum income. Such funds employ their funds in a high yield equity as well as in bonds. Number B देख सकते हो growth fund. Growth fund invests in the fund in equity stocks with the objective of capital appreciation of the investment over a long period of time. Growth funds is a high risk investment fund with a high capital gains potential and low current income assurance. Number C देख सकते हो बैलेंस्ड फंड। द एम ऑफ बैलेंस्ड फंड इज टू प्रोवाइड बोथ कैपिटल एप्रिसिएशन एंड रेगुलर इनकम। नंबर डी देख सकते हो इक्विटी फंड। इक्विटी फंड इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज। सच फंड्स आर फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक रिस्क इन द होप ऑफ वेरी हाई रिटर्न्स। नंबर ई देख सकते हो बॉन्ड फंड। बॉन्ड फंड इन्वेस्ट इन वेरियस काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स सो एज टू एंश्योर रेगुलर एंड फिक्स्ड इनकम टू इन्वेस्टर्स। उसके बाद बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अकॉर्डिंग टू लोकेशन म्यूचुअल फंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डोमेस्टिक फंड। सबसे पहले आता है डोमेस्टिक फंड। म्यूचुअल फंड ऑपरेट्स विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, जैसे कि LIC वगैरह होते हैं। नंबर बी ऑफशोर फंड। ऑफशोर म्यूचुअल फंड्स फैसिलिटेट्स क्रॉस बॉर्डर्स फंड फ्लो। These funds attract foreign capital from investments in the market of specific countries or countries. Others की बात करते हैं। In addition to the above mutual funds, there can be some other type of mutual funds also. सबसे पहले देखिए selective sectoral fund. The sectoral fund investments in specific sector like power, telecommunications, information technology,
entertainment, etc. Number B, taxation fund. Taxation fund is designed to provide tax exemption benefits to the investors. उसके बाद आता है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड. मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आर सेट अप टू इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स और डिपॉजिट्स. एंड लास्ट देख सकते हो इंडेक्स फंड्स. इट इज म्यूचुअल फंड्स व्हिच इन्वेस्ट इन ओनली द सिक्योरिटीज इन द इंडेक्स और व्हिच इज बेस्ड ऑन दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स, निफ्टी 50 एटसेट्रा. तो आज के लिए बस इतने. अगले वीडियो में हम बाकी पॉइंट्स को कवर करेंगे. तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाते एक्टिविटीज आपको मिलते रहे. मिलते हैं अगले वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तो कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा. आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप में भी बात कर सकते हैं. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.